Okay, good evening, all of you. So, today we are going to discuss one important session, one important sheet, competency focused practice questions. It is one of the very important sheet of the class 10th board, computer science. Now, we are going to start from the question number 1 and try to discuss as much as we can. See, the first question is, what is the type of error if any, when two methods have the same method signature? As we know that in the method overloading, answer the question when I ask to you. Okay, wait for a minute and listen carefully. The recording is going on. Okay. In the function overloading, always remember one thing. Two functions cannot have the same signature or same prototype. For example, suppose I have created a class ABC, and inside the class I have created one function F1, and it is containing a single parameter, and this is the body of the function. So I cannot create another function having same function signature. You can see this is called function signature. A नेम से लेकर ये जो पैरामीटर का सेक्शन होता है इसे हम लोग सिग्नेचर कहते हैं. तो दो फंक्शन का सिग्नेचर सेम नहीं हो सकता. दिस इज द वायलेशन ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग. तो दिस विल क्रिएट अ सिंटैक्स एरर. तो इसका राइट आंसर होगा सिंटैक्स एरर. होप यू अंडरस्टैंड. सेकेंड, द एडवांटेज ऑफ द यूजर डिफाइन मेथड्स. वो मेथड जो यूजर अपनी कन्वीनियंस के लिए डिफाइन करता है उसे हम लोग यूजर डिफाइन मेथड्स कहते हैं. There are two types of methods in the Java. I'm not solving the question directly. मैं उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश कर रहा हूं. I'm trying. So, Java में there are two types of function. One is library or built-in function. These are the function provided by the Java. And the other category of the function is user-defined function. User-defined function. The short form is called UDF. इसमें यूजर अपनी लॉजिक और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शन को डेवलप करता है. अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि एक बार अगर हमने फंक्शन को डेवलप कर लिया तो वी कैन यूज दिस फंक्शन नंबर ऑफ टाइम्स. सेकेंड, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं. तो जब हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग मॉड्युलैरिटी कहते हैं. तो रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्युलैरिटी इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो कहीं पर अगर ये ऑप्शन आ रहा हो तो यू कैन टिक. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक द फोर्थ ऑप्शन. First and third. This is the right answer, first and third. So first is reusability. Reusability means once the function is created, it can be used number of times. Modularity means a big problem can be divided into sub-small problems. It's called modularity. तो इसके लिए कहा जाता है the best way to solve the problem is to modularize, is to breaking into the modules. Next question, parameter. Just a moment. Listen carefully. Suppose a function is defined wide process and it has two parameters, x and y. This is called parameter. And this is the body of the function. And I'm calculating the values of x plus y. Don't worry about the body. I'm writing a simple function. अब इस function को हम call करेंगे. So at the time of calling, we have to pass the two values, one for x and another for y. So I am passing 10, 20. So listen carefully. 10 will be stored in x and 20 will be stored in y.
तो व्हाट इज 10 एंड 20? तो 10 and 20 is a parameter which is passing to the function. So these parameters called actual parameter. Very important question. And the parameter which is defined in the function signature are called formal parameter, right? So this is formal parameter, this is actual parameter. Now we can come to the question. The parameter which receives the value from the called method. Called method से यहां पर फंक्शन कॉल हो रहा है, इससे वैल्यूज जो पैरामीटर रिसीव करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है फॉर्मल पैरामीटर. अंडरस्टूड? क्लियर? एक्चुअल ये है, दीज आर द एक्चुअल जो वैल्यूज पास हो रही है फंक्शन को. ये कह रहा है कि फ्रॉम द कॉल्ड मेथड, दिस इज द कॉल्ड मेथड, इट टर्म्ड एज formal parameter. Understood? The right answer is formal parameter. Just a moment. Resume. Okay. Now another set of the question paper. Clear. Use the define function again. See which of the following is a valid. Valid. Valid means क्या चीज allowed है, क्या चीज allowed नहीं है. तो valid और invalid. किसी भी दो पैरामीटर्स के बीच में सेमीकोलन नहीं लग सकता, इट इज नॉट वैलिड. सेमीकोलन इज हियर. पब्लिक परफॉर्म. परफॉर्म इज अ मेथड. मेथड. परफॉर्म इज अ फंक्शन. तो इसके साथ इन्होंने रिटर्न टाइप नहीं लिखा. तो फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड अलोंग विद द रिटर्न टाइप. इफ देयर इज नो रिटर्न टाइप, this cannot be a function, this can be a constructor. So method always have the written type. Even void, int, double, so it is not valid. It is not valid, it is invalid. Public int perform, int a comma int b, this is absolutely fine. यहां पर प्रॉब्लम क्या है? लास्ट में किसी भी फंक्शन के नाम के बाद रिटर्न टाइप नहीं हो सकता. रिटर्न टाइप हमेशा फंक्शन के नाम से पहले होता है, और यहां पर इन्होंने फंक्शन के नाम के बाद रिटर्न टाइप ले लिया, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो int परफॉर्म हो सकता है, बट परफॉर्म int नहीं हो सकता. तो दिस इज ऑल्सो इनवैलिड. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. अंडरस्टूड? लेट मी क्लियर. अब हम आते हैं 5 और 6 क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 को please read properly. Each and every question before answer it, you have to read it properly. Focus. Focus is very important activity in the MCQ. Which of the following is a correct statement? Correct. Incorrect नहीं पूछ रहे, correct. तो I have underlined. To invoke the method with the prototype display int a comma char ch. ऐसा मेथड कॉलिंग बताइए कि जो इस मेथड को कॉल कर ले. ओके ओके, लेट मी चेक. ए इज अ कैरेक्टर, और कैरेक्टर इंटीजर में जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन. बट 45 इज अ इंटीजर, वो कैरेक्टर में डायरेक्टली नहीं जा सकता क्योंकि यहां पर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड. तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. डिस्प्ले हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं विदाउट पैरामीटर, ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फंक्शन इज एक्सपेक्टिंग टू पैरामीटर एंड वी आर नॉट पासिंग पैरामीटर. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. हियर हियर वी आर पासिंग ए. अब ए इज अ कैरेक्टर, तो कैरेक्टर कैन नॉट पास विदाउट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. So this is also wrong. And if a is a variable, the value of a is missing. So it is also wrong. Now this is 45 is an integer that can be stored in a, and a is a character that can be stored in ch. So this is absolutely right. So option D is the correct answer. Analysis. String. String. Okay. String mean which of the following is the correct Java statement to convert the word respect to the lower case? Word को हम lower case में convert कर रहे हैं, और word is respect. Respect to lower case. Naming convention के according ये नहीं हो सकता, क्योंकि as per naming convention
if there are two words, in a function, if there are three words in a function, the first word initial will be small, and all the initial of the intermediate word must be capital. So this is a violation of naming convention. Now what about this? 2 is a small, L is capital, and C is also capital. This is perfect. What about this 2 lowercase? No. 2 lowercase respect. Respect should be first. जिसे कन्वर्ट करना है वो पहले होना चाहिए. String dot to lowercase. String dot to lowercase. No. Again, the respect should be first. So option B is the correct answer. Understood? Which one of the following is a wrapper class? If we talk about informative knowledge of the wrapper classes were introduced in the Java to convert any primitive values to object. So for conversions of primitive to object, wrapper classes are need or required. तो अब यहां पर कौन कौन से wrapper classes हो सकते हैं? So just 1 minute. Let me scroll the screen. Seventh and eighth. 7. What are the wrapper classes? Wrapper classes का initial हमेशा capital से. It can be a wrapper class, yes, and it can also be a wrapper class. ये दोनों wrapper classes नहीं हो सकते. Again, the rule of writing the class in the Java, the initial must be capital. जैसे कि अगर हम कुछ जावा के क्लासेस के बारे में बात करें, जावा के वो क्लासेस जो हम यूज करते हैं, लाइक मैथ इज अ क्लास ऑफ जावा, इज अ वेरी फेमस क्लास ऑफ जावा, तो एम विल बी कैपिटल. स्कैनर is a very important and prominent class of Java. S must be capital. System, S must be capital. So all the classes of Java, initial must be capital. तो ये दोनों तो हो सकते हैं, but ये नहीं हो सकते. तो 1 and 4. So 1 and 4 is the right answer, option A. 7 question we have discussed. Okay. What is the unboxing, autoboxing, and typecasting and provision? Separate lectures are uploaded in my channel. You can watch. What is the conversion of wrapper class to the corresponding prop? 1 minute. अगर हम primitive को object में convert करते हैं, from primitive to object, इसे हम लोग कहते हैं boxing. और जब हम रिवर्स प्रोसेस लेते हैं ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव, तो इसको कहते हैं अनबॉक्सिंग. अनबॉक्सिंग. तो अब यहां पर क्या हो रहा है? रैपर क्लासेस, कन्वर्जन ऑफ रैपर क्लासेस टू करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव, मतलब क्लास से प्रिमिटिव में आना, इट इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग. प्रिमिटिव से ऑब्जेक्ट में जाना, बॉक्सिंग, और ऑब्जेक्ट से वापस प्रिमिटिव में आना इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग. और क्लास इज समवेयर कनेक्टेड टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू क्लास. तो conversion of a class to its corresponding primitive is called unboxing. Just a moment. Let me clear. Next questions. 8 questions are done. Question number 9, 10, and 11. These 3 are questions in discussion. 1. The string methods which results only the positive integer. ऐसा कोई भी फंक्शन जो पॉजिटिव इंटीजर हमें दे. तो पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम बात करें तो कंपेयर टू कैन रिटर्न पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, बट लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव. इंडेक्स ऑफ may be written पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो ये दोनों फंक्शन नेगेटिव देते. तो परफेक्ट ऑप्शन इज डी.
या अब देखो, यहां पर बहुत ध्यान से देखना। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया, तो यहां पर हमारा आंसर आ रहा है ऑलवेज पॉजिटिव। तो लेंथ हमारा ऑलवेज पॉजिटिव। अब द मेथड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू डबल, स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट करने के लिए वी अगेन टेक द सपोर्ट ऑफ रैपर क्लास। तो स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट करने के लिए हमारा सिंटैक्स होता है डबल डॉट पार्स डबल, and inside bracket we have to pass a string which is supposed to be converted। तो यहां पर हम string as a argument पास करते हैं। तो आई थिंक हमारा इससे मैच कर। तो डबल डॉट पार्स डबल ब्रैकेट में स्ट्रिंग, करेक्ट। ये कह रहे हैं कि द जावा स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स एक्स डॉट एलन रिजल्ट इन, ये कौन सी रिजल्ट जनरेट करेगा? मैं बता दूं, एक्स में हम एक एरे एज्यूम कर लेते हैं of 5 elements. And what about the index like 0, 1, 2, 3, 4? These are the indexes, right? 1 minute. Listen carefully. अब हमने लिखा x ब्रैकेट में x डॉट लेंथ। तो इस पूरे की लेंथ कितनी होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड लेंथ। तो 1, 1, 2, 3, 4, 5। x के 5 पर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं। तो अगर हम किसी ऐसे इंडेक्स से वैल्यू को एक्सेस करते हैं जो इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। एंड एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन इज अ वेरी कॉमन रन टाइम एरर। तो x के 5 पर कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज लास्ट वैल्यू हमारी है 4 तक। तो 0 to 4 आर द लीगल इंडेक्सेस, और अगर हम 5 लेते हैं तो ये देगा रन टाइम। नाउ लेट मी क्लियर ऑल दिस एंड क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following is a valid array declaration statement to store the gender of 80 employees? Gender of 80 employees, हमें 80 employees का जेंडर स्टोर करना है। ओके तो यहां पर ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया, एंड स्क्वायर ब्रैकेट इज इंडिकेशन दैट जेंडर इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल, इट्स एरे वेरिएबल। यहां पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट दिया है इज इक्वल टू न्यू कैर। इट कैन बी अ राइट आंसर, बट हम और भी देख लेते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग क्योंकि हाफ डिक्लेरेशन है, न्यू कीवर्ड इज नॉट देयर। जेंडर, यहां पर हम लेंथ को स्पेसिफाइड नहीं करते, स्पेसिफाइड यहां पर होती है लेंथ। तो द बी इज अ करेक्ट आंसर, बी इज अ करेक्ट आंसर। Arrange the following Java statements in a correct order of execution to accept the values। तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट लाइन हमारा एरे का डिक्लेरेशन होगा, क्योंकि स्कैनर को हम बाद में भी ले सकते हैं। अब इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट हमें करना है कई एलिमेंट्स का। तो आफ्टर द डिक्लेरेशन वी कैन गो विथ स्कैनर, देन वी कैन गो विद द फॉर लूप, देन वी कैन गो विद द इनपुट स्टेटमेंट। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है, मतलब सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन वन। इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन बी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट। कैसे? सबसे पहले हमारा एरे का डिक्लेरेशन होगा। एरे विल बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट लाइक INT ए, शॉर्ट में लिख देते हैं न्यू INT, बिकॉज विदाउट एरे डिक्लेरेशन तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद इनपुट के लिए वी नीड अ स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट,
तो स्कैनर हमारा सेकंड नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद हम एक लूप एग्जीक्यूट करेंगे। लूप, बिकॉज हमें मल्टीपल वैल्यूज इनपुट करनी है, तो लूप के अंदर ही वैल्यूज का इनपुट होगा। तो i <10 एंड i++, और इसके बाद a of I is equal to sc dot next time to the correct order. Understood? So option B is the correct option. Let me clear all this. 14. Only 15 we will cover today in the first session. In the bubble sort technique, during each iteration of the inner loop, two adjacent elements. क्या होते हैं दो adjacent element? पहले compare होते हैं, whether they are greater than or less than, और then होते हैं swapped. Swapped इसलिए ताकि वो सही पोजीशन पर आ जाए। तो कंपेयर एंड स्वैप आर द टू इंपॉर्टेंट ऑप्शन। तो कंपेयर्ड एंड स्वैप, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ एनी एरे ऑफ 100 एलिमेंट? तो अगर 100 एलिमेंट्स है तो indexes will be created from 0 to 99. So this is the smallest index and this is the peak or highest index. तो अगर हम लोग 100 की बात करें और ये हाईएस्ट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो हाईएस्ट इंडेक्स होगा 99। क्लियर? If you have any doubt and confusion, you can type your doubts in a comment. I will immediately try to reply.